सड़क पे पड़े रहते हैं, धूप में पड़े रहते हैं, कोई छाया नहीं होती है, पानी पीने के लिए नहीं होता है, पानी कहीं से मांग मांग के बरमे से कहीं चला के ले आते हैं पानी पीने के लिए बच्चों के लिए। सारे दिन कोई साधन नहीं होता है वहाँ पर, वो भी फिर सारे दिन ऊपर लगे रहो तो नीचे कोई देखने के लिए नहीं है, कोई सड़क पे साधन ही नहीं है, छाया नहीं है कोई बच्चों के लिए। बारिश होती है तो झुग्गियाँ भर जाती हैं तो पूरी रात जागते हैं, बच्चों को ले के बाहर खड़े होते हैं। पुरुष की ज़्यादा होती है और हमारी कम होती है। कहते हैं तुम बच्चों में लगी रहती हो, तुम उतना वजन नहीं उठा पाती हो, उतना काम नहीं कर पाती हो, तो तुम्हें कम दिया जाएगा और आदमी को ज़्यादा दिया जाएगा। जबकि काम बराबर ही करते हैं, औरत भी उतनी काम करती है और आदमी भी उतनी काम करता है, लेकिन फिर भी औरत को कम ही दिया जाता है। कहते हैं औरत की गिनती मतलब कम ही है। The Construction Workers Welfare Board was set up in 2002 in Delhi, 6 years after the 1996 Act, after the Central Act. Now today the biggest challenge in front of us is actually registering the workers with the Welfare Board. Because once the registrations happen and once they happen in large numbers, then you are able to build that kind of pressure on the government, on the Labour Ministry in particular, to get their administrative mechanisms in place so that the workers can actually access those benefits. रजिस्ट्रेशन करने में फ़ायदा बहुत सारे हैं। जो हम सोच के चल रहे थे कि एक मजदूर को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सके, वो फ़ायदे हैं। वो फ़ायदे ये हैं कि बुढ़ापे में पेंशन है, दुर्घटना का मुआवजा है, जैसे बच्चों की स्कॉलरशिप का फ़ायदा, वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। ये कार्ड मेरे को बना हुआ 10 साल हो गया कार्ड को। खट खट के दिए 20 रुपया महीने जमा करते हैं, उसके समाधान कुछ भी नहीं आता। नहीं बोला था पहले कि बच्चे का साधन दूंगा, पढ़ाई लिखाई दूंगा, वो कुछ भी नहीं हुआ। जो घटना हो जाता है, जो मकान से गिर जाते हैं, वो बोला उसका मैं सुविधा दूंगा, उस कुछ नहीं सुविधा मिलते हैं। उसके बाद बोला कि अगर कोई बीमार खमार घर में पड़ जाते, बेरोजगार हैं, तो उसके भी मिलेंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं दिया हम लोग को। काम तो 12 महीना मिलते नहीं है, साल में मुश्किल से 3 महीना 4 महीना 5 महीने काम मिलते हैं, काम मिलते नहीं है बराबर। वहाँ सर जब काम करते हैं तो बस काम का ही है कि वो पैसे मिलते हैं, बाकी कोई सुविधा नहीं है। गिर गए, पड़ गए या मर गए या किसी रास्ते में आके एक्सीडेंट कर गए, ऐसा कोई सुविधा अभी तक हम लोग को नहीं है। If we are talking about Commonwealth Games, if we are talking about the spirit of fair play, it should really be fair play for everybody, and it should be fair play for the workers who are building our homes and our offices and our sports facilities. And so we are really talking about a different paradigm of development, the kind of development which is for everybody. So it's not really exclusive cities for a few with shining buildings, but inclusive growth for all. But the positives today, as opposed to the case during the Asiad 82 for instance, the positives are that there is no resource crunch. The positives are that there is some kind of administrative machinery in place, and the best part is that in 4 states, in Kerala, Tamil Nadu, Puducherry and Madhya Pradesh, there are some good practices in place. So we are able to say, let's look at them, let's see what's happening in the other states, and let's make those same things happen here in Delhi. Because at the end of the day, Delhi is the capital of the country, and we really have to be setting a model for other states. But the fact is also that there are migrant workers who are doing the construction. So if workers are coming from Bihar and they're coming from Odisha or Jharkhand, we have to ensure that the same laws